Good morning, children. I hope you all are well. Today, I will teach you chapter number 2. Honesty is the best policy. Page number 13. Take out your book and listen carefully. A milkman lived in a village. He bought a milk from the village and sold it in the city. एक बार एक मिल्कमैन दूध वाला एक गांव में रहता था और वो अपना दूध कहाँ बेचने जाता था? सिटी में. He had to cross a river daily to reach the city where his customer lived. वो रोज रिवर क्रॉस करके सिटी में जाता था जहाँ उसके कस्टमर रहते थे. He mixed a big amount of water of the river with the milk that he sold to his customer to earn a good profit. वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए खूब ज्यादा पानी मिलाता था उस दूध में जो वो अपने कस्टमर को बेचता था. In a short time he became much wealthy. बहुत कम समय में वो बहुत ज्यादा वेल्दी हो गया. Who has a lot of money. Wealthy means जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है. Who has a lot of money. The milkman had a young son. He wanted to marry him. उसका एक यंग बेटा था जिसकी वो शादी करना चाहता था. One day he went around the city collecting the dues in order to celebrate the wedding of his son. एक दिन वो अपने ड्यूज सारे कलेक्ट करने गया जितना भी पेमेंट उसका बाकी था अपने बेटे की वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए. उसने बहुत सारा सामान लेना था. He collected a large of amount from his customer. बहुत ज्यादा पैसा उसने अपने कस्टमर से लिया. Then he reached the market. There he purchased a lot of rich clothes and gold ornaments. उसने बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स खरीदे, बहुत ज्यादा रिच अच्छे कपड़े खरीदे, महंगे महंगे. On his return journey, while he was crossing the river, a heavy storm came. अब जो अपनी उससे सब कुछ खरीद के रिवर क्रॉस कर रहा था, वापस आ रहा था तो एक तूफान आ गया. It capsized the boat. All his costly purchase fell into the water and was swallowed by the river. उसका जितना भी कॉस्टली ऑर्नामेंट्स था, जितना कॉस्टली क्लोथ था, सब रिवर ने निगल लिया कह सकते हैं, या रिवर में चला गया. He could hardly save his life. बहुत मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई. Now next, as the milkman reached the bank of the river, जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा, he looked back at the boat. It was overturned and floating over the water. जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो बोट है उल्टी हो गई थी और पानी में तैर रही थी. He was speechless with grief. वो उसे बहुत दुख हुआ और उसके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे. At that time he heard a voice that came from the river. तभी उसको नदी से एक आवाज सुनाई दी. Do not weep, रो मत. What do you have lost was not yours. जो भी तुमने खोया वो तुम्हारा कुछ नहीं था. It was the gains you earned through cheating your customers. वो सब जो तुमने पाया था वो तुमने अपने कस्टमर को धोखा देके चीटिंग करके पाया था. The man was amazed but he realized that it was true. उसको बहुत सरप्राइज हुआ लेकिन वो जानता था कि ये बात तो सच है. He made a promise to himself. उसने अपने आप से प्रॉमिस किया. Now I will not cheat my customer. अब मैं अपने कस्टमर को धोखा नहीं दूंगा. I will be an honest person. अब मैं एक ईमानदार पर्सन बनूंगा. Now what is the moral of the story? Honesty is the best policy. I hope you understand the chapter. Now look word meaning of this chapter. Hard words: customer, wealthy, dues, wedding, ornament, capsize, swallow, speechless, amazed. And meaning: customer, a person who purchases or receives a product or service. Wealthy, one who has a lot of money. Dues, a payment. Wedding, marriage. Ornament, a thing used for making someone attractive. Capsize, to be overturned in the water. Swallow, allow something to pass down the throat. Speechless, unable to speak. Amazed, surprised. I hope you understand the chapter. Learn word meaning of this chapter and question answer. Okay, do it yourself. Thank you so much.